Wish you a very good morning. Today, we are going to begin a new topic. And the name or title of the new topic is Concord or Subject-Verb Agreement. What do you mean by Subject-Verb Agreement? After watching this video, you will be able to identify the subject is either singular or plural. You will be able to use the correct form of verb agreeing with the true subject in the sentence. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। जिस भी स्टूडेंट को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पर कमांड है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आई गारंटी यू विल बी एबल टू हैव ए गुड कमांड ओवर द यूसेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट ए फ्यू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू टेल either these sentences are correct or wrong. For example, I is happy, they am happy, or she are very good students. Are these sentences right? No. Why? Because the verbs are not agreeing with the subjects in the sentences. We can't use I with am with she, is with I, or are with he. In case of pronouns, first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. Before going to begin this topic, let us have a recap of this topic subject verb agreement. In case of subject agreement, verb agreement, you have to identify the subject first of all. You have to identify. If the subject is singular, use singular verb with singular subject. लेकिन कई बार हम सब्जेक्ट को पहचान ही नहीं पाते हैं, either it is singular or plural. आप आगे देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर दिखते हैं, दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, या दिखने में प्लूरल हैं होते सिंगुलर हैं। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। इसके अलावा आइए एक सेंटेंस देखते हैं। मोहन रीड्स अ स्टोरी। यहां पर मोहन इज द नेम ऑफ ए सिंगल पर्सन, मीन्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट और ए सिंगुलर नाउन, एंड वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद मोहन because this agrees with the subject. Mohan reads a story. Here we add s to the V1 of read, so it becomes singular. यहां पर एक बात ध्यान देने की यह भी है, if we add s to singular noun, it becomes a plural noun. But if we add s or es to a singular verb or a V1 of the verb, it becomes singular. वर्ब के साथ s या es लगने पर वो वर्ब सिंगुलर होती है, जबकि नाउन के साथ s और es लगने पर वो नाउन प्लूरल हो जाता है। अर्थात अगर हम s की बात करें, s और es के लगाने की बात करें, मोहन रीड्स अ स्टोरी, यहां पर मोहन सिंगुलर नाउन है और रीड्स सिंगुलर वर्ब है। बच्चे सिंगुलर प्लूरल नाउन के केस में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु इस एक्सपीरियंस से वो ये सीख जाते हैं, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि रीड के साथ एस लगने से रीड प्लूरल बन गया। नहीं, ये सिंगुलर वर्ब के साथ एस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, नाउन के साथ एस लगने से नाउन प्लूरल हो जाती है। इन द सेम वे, if the subject is plural, use plural verb with plural subjects or plural nouns or noun phrases. The boys play football. यहां पर हमने boy
जो नाउन था सिंगुलर उसके साथ एस लगाया, इट बिकम्स प्लूरल, द बॉयज। लेकिन प्ले के साथ हमने एस नहीं लगाया बिकॉज दिस इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। There is a golden rule in case of subject verb agreement. And what is that golden rule? Singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. In this way, we can learn the concept of subject verb agreement. आइए हम प्रोनाउन के केस में देखते हैं कि कहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कहां प्लूरल का यूज करते हैं। आइए हम उन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा दोहराते हैं। I am happy. We use am with I. She is happy. We use is with she. They are happy. We use are with they. In this way, we have to follow subject verb agreement rules. मैं आपको कुछ subject verb agreement rules के माध्यम से इस subject verb agreement के concept को, Concord के concept को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम नजर दौड़ाते हैं वेयर डू वी यूज इज एंड वॉज। एज यू नो दीज आर सिंगुलर वर्ब्स, दीज आर सिंगुलर वर्ब्स एंड ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नाइदर विद सेकंड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओनली ही, शी एंड इट। Third person singular subjects, we use is and was. He is, he was, she is, she was, it is, it was. We shall never use are, have, do with these singular subjects. In case of I, of course it is singular in nature, but first person I, we use am with I. And in case of plural, we, first person plural, we use are or were with we depending upon the situation and sentence. In case of you, either singular or plural, it has a single form. There is no change. Only you, either it is singular or plural. We use are or were in both the cases, in both the numbers, and with third person plural they, we use are and were. In the same way, we use has with third person singular pronouns he, she and it, but we use have in case of singular and plural first person pronouns I or we, you or you and they. In the same way, where do we use does, do and did? We use does because it is a singular verb. As we have added es to do, it becomes singular as we have discussed. We use does with he, she and it in case of negative or interrogative sentences of simple present tense. We use do with all the other pronouns I, we, you and they. In this way, if we use a wrong verb, a singular verb with a plural subject, it becomes wrong. If we use a plural verb with a singular subject, it again becomes wrong. So, we have to pay attention to the subject verb agreement in English grammar. We must have used a singular verb with a singular subject and a plural verb with a plural subject. Let us have I am happy. Here this verb am agrees with this subject I. I can't write I is happy. We are happy. Here this is a plural verb and this agrees with this subject we. Again they are happy. This verb are agrees with they, being a plural subject, plural pronoun. And she is happy. This verb is agrees with this subject she. But there are many subjects
nouns or noun phrases which are difficult to identify, either they are singular or plural. Now, let us discuss rule wise. I will discuss with you subject verb agreement choosing certain rules. Students, आइए हम एक एक्सरसाइज के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखें. There are a few sentences in this exercise and we have to fill in the verbs given in the brackets against them. Now, first of all, rule 1. What does the rule 1 say? It says that find the true subject in the sentence. सबसे पहले आपको हो सकता है 2, 3 या ज्यादा नाउन्स किसी सेंटेंस में दिखाई दें. यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट जिससे एग्री करती हुई वर्ब हमें उसमें फिल इन करनी है. आप वो ट्रू सब्जेक्ट ढूंढिए. फॉर एग्जाम्पल, देर आर ए फ्यू सेंटेंसेस. द बॉक्स ऑफ कॉइन्स डैश मिसिंग. द बॉक्स ऑफ कॉइन्स, हियर a noun, the box, and coins is again a noun. The box of coins dash missing, and we have to fill in either was or were in this sentence agreeing with the subject in person or number. For example, यहां पर हम देखें coins looks plural because s is there, and if we add s to a noun it becomes plural. बट द बॉक्स इज सिंगुलर. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां पर वॉज यूज होगा या वर यूज होगा? वेरी सिंपल. रूल फर्स्ट सेज फाइंड द ट्रू सब्जेक्ट. हियर द ट्रू सब्जेक्ट इज द बॉक्स, नॉट द कॉइन्स. यहां कॉइन्स सब्जेक्ट नहीं है. द ट्रू सब्जेक्ट इज द बॉक्स विच इज सिंगुलर, एंड फॉर ए सिंगुलर सब्जेक्ट fill in the singular verb. So, we shall use was, not were. यहां आपको coins देखकर were नहीं लिख देना है. Find the true subject and then fill in the proper verb in the sentence. Next is the quality of bananas. Again, the word bananas is plural in nature, in number. But we have to fill in the verb agreeing with the subject, with the true subject actually. The quality of, here this word, this noun, the quality of bananas, either it is singular or plural, it doesn't matter. The verb should agree with this true subject in number or person, and this is singular in number. So the quality of bananas was not good. आप जो कल केले लाए थे उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. केले अच्छे नहीं थे नहीं है यहां पर केलों की गुणवत्ता की बात हो रही है. क्वालिटी ऑफ बनानास की बात हो रही है. was not good. We have to fill in this verb agreeing with the true subject. So we have to identify the true subject first, and then we have to decide the correct form of verb to be filled in the sentence. Next is the list of grocery items dash long. Again, we have to fill in either is or are. The list of grocery items, this is plural. But it doesn't matter because something of some things. A list of some things. Here, what is the true subject? This is the true subject. And this is singular. The list is long. Of what? Of grocery items, of stationery items. The list is long. We have to identify the true subject and then fill in the correct form of verb agreeing with the true subject. Next is the lists of items, or the lists of grocery items, the list of stationery items. Here we have no connection with this noun items. We have to find out the true subject, and the true subject in this sentence is lists.
which is plural. And now we have to use are. The lists are long basically. आप इस प्रकार से ट्रू सब्जेक्ट को ढूंढते हुए वर्ब का यूज कर सकते हैं। आपको देखना है ट्रू सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इफ इट इज सिंगुलर, यूज अ सिंगुलर वर्ब। इफ इट इज प्लूरल, यूज ए प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल डैश डे टू डे, एंड वी हैव टू फिल इन vary or varies. Vary means change. V-A-R-Y. The price of petrol, here this is the true subject, the price, which is singular. The price of petrol, and for a singular subject we shall use a singular verb. And in case of verb being singular, add s or es to it. It will become varies. The price of petrol varies day to day. पेट्रोल की कीमत दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है, हर दिन बदलती रहती है। The prices of petrol, here this word, this is the true subject and this is plural, prices. So we shall use a plural verb. और मैंने आपको बताया था प्लूरल वर्ब के साथ कभी भी s नहीं लगता, प्लूरल नाउन के साथ लगता है। The prices of petrol vary from time to time or town to town. Vary. This verb vary agrees with this true subject, the prices. Plural subject, plural verb. Singular subject, singular verb. Even a child dash its own society. बच्चे बच्चों में खुश रहते हैं। You know it very well. उनकी एक अपनी सोसाइटी होती है। बच्चे बच्चों में खुश रहते हैं, इसीलिए तो वो चुपचाप धीरे से खिसक लेते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए। Even a child, here the subject is singular. Even a child dash its own society, has or have. Being singular, we shall use has. Its own society. We can use this it for a child. And next is even children dash their own society. There, it is plural. And this there is used for the children. And here children, which is the true subject in this sentence, is plural. So we have to fill in the plural verb agreeing with this plural subject, have. Have their own society. In this way, first rule says that we have to find out, we have to identify the true subject, use verb agreeing with the true subject, agreeing in number and person.